everybody, welcome to Math Made Easy by Planet Spark. All my 10th graders, finally we are starting with the syllabus. And here we have the first topic of the first chapter, that is Fundamental Theorem of Arithmetic and Prime Factorization. तो start करते हैं with the first topic here. देखो, every composite number we know can be expressed as a product of prime numbers. अब यहीं पे मत अटक जाना, what are composite and primes? Yes, you all know that prime numbers divisible by one and itself. Composite जो prime नहीं है, that is composite. मतलब इन दो के अलावा और भी factors होंगे. Now, which forms the basis of the fundamental theorem of arithmetic? Right? क्या कहती है ये theorem? We can say the theorem says that for any composite number, the prime factorization is unique except for the order, right? 2 into 3 को 3 into 2 में लिख सकती हूँ, but prime factors 2 और 3 ही होंगे एक composite number के. Unique prime factorization होगी, that is what is given by the fundamental theorem of arithmetic. So we can say the prime factorization of a composite number is unique except for the order in which the prime factors are written, right? Definition of the theorem there. So we can say any natural number can be written as a product of powers of prime, right? Obtained through a method like factor tree. Factorize करना है basically, तो factor tree ले लो, long method ले लो, ladder method, किसी भी method से just factorize it using just the prime factors there, and we get the prime factorization. The theorem is used in applications such as finding the HCF and the LCM using prime factorization and understanding properties of numbers. Use कहाँ करेंगे? Numbers की properties को use करने में, understand करने में, and HCF और LCM find out करने में. That is the highest common factor and the least common multiple. कैसे find out करेंगे using prime factors? Let's see. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let's say we have the numbers 15 and 50. Okay, prime factorization करेंगे. 15 is 5 times 3 and 50 is 5 times 2 times 3. No, 5 times 2. My bad. ओके, अब LCM और HCF के लिए हमें क्या चाहिए? यस एवरीबडी, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. कैसा फैक्टर? लीस्ट, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें, क्या कॉमन है? सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, दैट इज 5. सो दैट बिकम्स द HCF, राइट? मोर देन 1 हो तो उनका जस्ट हम प्रोडक्ट ले लेंगे. अब आते हैं LCM पे. यूजिंग फैक्टराइजेशन लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? सारे यूनिक प्राइम नंबर्स को लिखो जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में आए हैं. 5 आया है, 3 आया है, 2 आया है. प्रोडक्ट लेंगे इनकी मैक्सिमम पावर्स का. यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है. तो मैक्स पावर क्या है 5 की? 2. तो विल टेक 5 टू द पावर 2. 2 की एक ही पावर है, दैट इज 1. 3 की एक ही पावर है, दैट इज 1. इसका प्रोडक्ट लेंगे एंड दैट इज द LCM. सो दैट इज 25 times 6. That is 150 and that is the LCM. So that's how using prime factorization we can find the HCF and the LCM. फैक्टर डायरेक्टली कॉमन दिख जाएंगे, उनका प्रोडक्ट लो. LCM के लिए यूनिक प्राइम फैक्टर्स लिखो और उनकी मैक्सिमम पावर्स लो, राइट? एक की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है. सो दैट्स इट एवरीबॉडी. चलिए देन क्वेश्चंस पे आते हैं. एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. 140 लेडर मेथड यूज करेंगे. Start from the least prime, you know, and that is 2 everybody. Always remember that. The only even prime number and the least prime number, that is 2. 70 again by 2, 35, then 5 and then 7. तो 140 की prime factorization आ गई. 2 times 2 times 5 times 7, or we can write it as 2 square times 5 times 7. Right, just the prime numbers and their powers. Next question. Express 156 as a product of its prime factors. तो factor tree भी use कर सकते हैं, ladder method. This is the most easiest one, so we are using this. Answer same रहेगा. Okay, 2 से start करेंगे.
78 again by 2, then 3. Now 13 is itself a prime, so सिर्फ factor होगा 13. So we can say, we can write 156 as 2 square times 3 times 13, and that is the prime factorization. चलिए next question. Find the HCF and LCM of 26 and 91 and verify that LCM times the HCF is equal to the product of the numbers. ये rule देखो, remember this. LCM और HCF का product कोई भी दो नंबर का will be equal to the product of the numbers. So out of the four things, दो नंबर और उनका LCM, HCF, तीन चीजें अगर गिवन है, so using this rule we can find the fourth thing. Okay, चलिए यूज करेंगे यहाँ पे. We have the two numbers 26 and 91. सबसे पहले we'll do the prime factorization. 26 is, we can divide by 2, 2 times 13. Here we'll get 7 times 13. Okay, so factor तो clearly हमें दिख रहा है, the common factor, highest common factor एक ही है, that is 13. So we can say the HCF is equal to 13. LCM की बात करेंगे, unique prime numbers लिखेंगे, 2 है, 7 है, 13 है. Highest powers लेंगे, यहाँ पे 13 की highest power है 1, यहाँ भी है 1, तो 13 की power होगी 1. 2 की highest power 1 है, 7 की highest power भी अपने पास 1 है. So we'll take the product or do it like this, and that will be our LCM. Okay, 182. अब verify करेंगे ये result. So the product of HCF and LCM, that is 13 times 182, and the two numbers 26 times 91. दोनों क्या होंगे? Equal. So just do the calculations everybody and you will see both of them are equal. Do that and tell me in the comments what value are we getting. दोनों equal होंगी. Okay, चलिए जी. Next one. Find the LCM and HCF of 12, 15 and 21 using the prime factorization method. Same चीज करनी है, अब बस नंबर 3 है 2 की जगह. So let's see how will it change. So first of all 12, 2 times 2 times 3, 15, 3 times 5, 21, 3 times 7. Okay. सबसे पहले common factor की बात करेंगे. So what all do we have common in all three of them? अब 3 है तो तीनों में common देखेंगे. Okay, 2 is there? No. Again 2, 3 is there? Yes. I have a 3 in all of them. 5 है नहीं, 7 है नहीं. तो एक ही common factor है, so that will become the HCF. Highest common factor, that is 3. LCM. Same rule, no matter how many numbers we have. Unique prime numbers को list करो. 2 है, 3 है, 5 है, 7 है. Maximum powers. 2 की maximum power किसी भी prime factorization में कितनी है यहाँ? 2, right? 2 square, so 2 is the power. 3 की maximum power कितनी है? 1. 5 की maximum power 1, 7 की maximum power 1. So we'll just take the product of all of these and that is the LCM. So we'll get here 210. So using prime factorization हमें मिल गए हैं HCF and LCM 3 and 210 and that is the right answer. Next question. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. क्या मतलब है क्वेश्चन का कि n की कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू ले लें 1 2 3 4 5 100 2000 एनीथिंग कि 6 की कोई भी पावर है, क्या कभी इस वैल्यू का लास्ट डिजिट 0 होगा? कैन दैट हैपन? थिंक ऑफ इट, लास्ट डिजिट 0 कब होता है? व्हेन 10 इज अ फैक्टर. 10 इज अ फैक्टर मीन्स 2 and 5 should be the factor. प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे. 10 कंपोजिट है नंबर, तो 2 और 5 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में होने चाहिए. देन वी कैन से इट विल एंड अप विद 0. अब 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 2 times 3, राइट, टू द पावर n. सो 2 to the power n, 3 to the power n. कितने भी 2s ले लो, कितने भी 3s ले लो, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा 2 और 3 रहेगा. देयर विल नेवर बी 5 देयर. सो 2 and 5 अगर नहीं है तो एंड में 0
नहीं होगा. So we can say using the prime factorization we can say no, it cannot end with the digit 0 for any natural number value of n. Okay. Then let's summarize what we did here. That was all, everybody. We learned the fundamental theorem of arithmetic here. That is, every composite number can be written as a product of prime numbers uniquely. This factorization we can say is unique except for the order. अब multiplication में order matter नहीं करता, so order can be different. Numbers can be expressed as powers of primes using factorization method, just like we did here. वहाँ से applications क्या हैं? We can use them to find the HCF, the LCM and properties of numbers. For example, 6 to the power n का end digit 0 होगा है नहीं, and so on. Right? So try more questions and tell me in the comments, everybody, the question that I asked you. And here a quick reminder for you to sign up for the free trial class, everybody. Yes, it's absolutely free. दो simple step follow करने हैं बस. Description में link given है. Click करो, first information fill करो, that is the day and the time you want the class. And on the next step, just fill in your email. Submit करो and that's it. Trial class हो जाएगी schedule, you'll get all the information, then on the time you can just join it. So that was all, everybody. Thank you very much. Next time करेंगे इसी chapter का next topic.